नमस्कार बंधुगण वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएनटी एजुकेशन। आसंतु आज नजर पकईवा स्पेशल ओटीटी 2025 निमंते इंग्लिश पेडागोजी यूनिट 1। आपण माने पेपर 1 बा पेपर 2 जहाँ भी स्पेशल ओटीटी दउछंती देखंतु इंग्लिश लैंग्वेज पई आपणकर लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश पई आपणकर केते मार्क रहिछि ना सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश पई देखंतु 30 मार्क रहिछि एवं से 30 मार्क भितरे आपणकर इन ईच सब्जेक्ट एरिया 20 क्वेश्चन विल बी सेट फ्रॉम कंटेंट एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम पेडागोजी। ताले देखंतु जेहेतु आपणकर 10 मार्क रहुछि पेडागोजी रु तेणु 10 मार्क पई हमको प्रस्तुत होबार अछि। तेणु मात्र 4टी यूनिट आपण कवर करले मो बीएनटी एजुकेशन चैनल माध्यम रे आपण माने निश्चित भाव रे से 10 मार्क रु 10 मार्क ही अटेम्प्ट नै पारिबे। देखो जदि आम देखा यूनिट 1 रो टॉपिक कौन रही यूनिट 1 रे रही आपणकर लर्निंग इंग्लिश एट एलिमेंटरी लेवल इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ताले या ऊपर आम आलोचना रखिबा एवं ए संबंधी समस्त प्रश्न गुडी को आम आलोचनार परिसरभुक्त करिबा। ताले आसंतु लर्निंग इंग्लिश एट एलिमेंटरी लेवल रो आम थियोरी ऊपर नजर पकाइबा। देन शॉर्ट रे आम थियोरी को रीडिंग करिबा एवं ताको मेमोराइज करिबा। आपणकर एई थियोरी ऊपर ही आपणकर समस्त क्वेश्चन आसीबो। नो डाउट यूनिट 1 रु आपण माने निश्चित भाव रे 2 मार्क पाइबे। 4टा यूनिट रे आपण 10 मार्क पाइबे। त 4टा यूनिट कवर कर दबा बीएनटी एजुकेशन माध्यम रे आपणकर थियोरी जिबा देन क्वेश्चन आंसर मॉडल क्वेश्चन आंसर को आलोचना करिबा। देखंतु इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश पॉइंट 1 दिया है एज ए मैटर फैक्ट English language is the mother tongue of more than 300 million people in the western countries of the world. Then second point rahichi, it is used as the native or first language in the countries like the United Kingdom, the United States of America, England, London, Great Britain, Australia, South Africa and New Zealand, Canada, etc. Some other countries like India, Pakistan, France, the Soviet Union too use English as second language and the number of these people is nearly 400 million. English is thus spoken by about 700 million people in the world. English is the language, international politics, trades, commerce and industry. It is one of the 6th official languages of the UNO, full form of United Nations Organization. It is also the link language of the Commonwealth countries. English has rightly been described as a window on the rapid progress of technology and scientific knowledge. Then paravarti point rahichi, English language may be considered as the key to storehouse of knowledge and wisdom. This language has amazing flexibility and potentialities for powerful communication. It exercises a very powerful language of press, media, and international education arena. English is abundantly rich in literature. Then importance of English language in India. In fact, English language has occupied an important place in educational system of our life since long. It is taught compulsorily in the most school starting from class 1 to other higher classes in most of the states of country. It is medium of instruction in English medium, public school, colleges and universities. This language plays vital role for communication between union government and state governments. Likewise, almost the states of our countries uses this language for communication purpose among them. Then asiba paravarti point, this language is also used officially in parliament, state legislative, high court, supreme court, etc. If a person has adequate knowledge in English and if he is fluent and conversant in this language, he can get an opportunity for employment. Apart from above facts, till today we have become so adequated with English
words term that common people can better understand if these terms are used in day-to-day conversation instead of provincial term or words. So we all must learn English. A person using Urdu word in Hindi language is considered as the learned, highly qualified, and knowledgeable one. Likewise, a person speaking English frequently and fluently is considered in the similar manner. Hence, there is such more importance and necessity to learn English. Professor Ghosh and others have summed up the present state of English in India in these words. The fact is that the India English is something more than foreign language and something less than second language. It has many more users and many more uses than a foreign language has. At the same time, the predominant role which English had in many areas of communication is gradually being taken over by other languages. Then asantu এই content ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗୁଡା question ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର content ଥିଲା importance of learning English and the ତା ଉପରେ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା सब पॉइंट थिला तार केते गुडा को क्वेश्चन अछि देखंतु से क्वेश्चन ऊपर हम आलोचना करबा। आपण ए थियोरी को पुणी थरे रीडिंग करंतु। रीडिंग करला परे देखिबे ए क्वेश्चन गुडा को आपनकर बारंबार ही आसुची। लर्निंग इंग्लिश एट द एलिमेंटरी लेवल रे आपनकर ए क्वेश्चन गुडा को बारंबार आसुची एंड इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश दुटा पॉइंट गला। देन आसीबा ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ताले दी learning English at elementary level and importance of learning English उपरे probable question हमें नजर पकेबा। देखंतु प्रथम क्वेश्चन अछि choose the appropriate alternative. The Constitution of India has approved in 1950 English language as dash. Option अछि the native language, the national language, the आपनकर provincial language ना the official language of the country. एक नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होसी आपनकर ऑप्शन डी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। देन आसीबा परवर्ती क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन एट द स्कूल स्टेज इंग्लिश इज टॉट एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एज ए टीचिंग प्रोसेस और एज ए लर्निंग प्रोसेस और एज ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ताले स्कूल लेवल कथा जदि हम देखिबा एट द स्कूल स्टेज इंग्लिश इज टॉट एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तेणु राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन 3 नंबर क्वेश्चन आसीबा। 3 नंबर क्वेश्चन अछि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड डैश। ए राइट आंसर होछि बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। थियरी रे आपण माने देखछंती ताले राइट आंसर हबो द स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन सी। देन परवर्ती क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश इज द मीन्स ऑफ इंटरस्टेट कम्युनिकेशन। दिस मीन्स इंटरस्टेट मीन्स गोटे स्टेट रो पिला गोटे स्टेट रो लोक आ गोटे स्टेट रो लोक सहित कम्युनिकेशन पई आको यूज करछंती। ताले राइट आंसर हबो द पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट कन्वर्स और टॉक इन इंग्लिश। तेणु राइट आंसर होछि 4 नंबर आपनकर 4 नंबर बी पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट कन्वर्स और टॉक इन इंग्लिश। देन आसीबा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन रहछि इंग्लिश हैज बीन राइटली डिस्क्राइब्ड एज द लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज़। ऑप्शन रहछि ए रे द नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प गेट्स पासपोर्ट अपॉर्चुनिटी कम्स टू लर्निंग ऑफ इंग्लिश। सी रे दिया है द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज अ सक्सेसफुल पासपोर्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। डी रे दिया है इट इज अ लैंग्वेज ऑफ चांस। तेणु थियोरी रे कहा जाय द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज अ सक्सेसफुल पासपोर्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तेणु राइट आंसर होछि 5 नंबर सी। देन आसीबा आपनकर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन रहछि इंग्लिश इज एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज डैश। ए रे दिया है इट्स स्टडी is compulsory, it is used a medium of instruction at school and college level, or it is used official administration,
It can be used in parliament and official activities. English is associated official language of India as theory रे थिला देखिबे parliament आउ legislative कथा थिला तेनो राइट आंसर हो 6 नंबर रो आपनकर डी. It can be used in parliament and official activity. देन आसीबा 7 नंबर क्वेश्चन. 7 नंबर क्वेश्चन रे रहछि आपनकर English is the mother tongue of dash. थियोरी रे थिला आपनकर 3 मिलियन थिला आपनकर मदर टंग थिला 3 मिलियन आ आपनकर फास्ट लैंग्वेज थिला 4 मिलियन देन टोटल थिला 700 मिलियन. ताले राइट आंसर होछि इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ 300 मिलियन पीपल इन वर्ल्ड. तेन 7 नंबर रे आपनकर ऑप्शन होछि राइट आंसर बी. द क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन अछि इंग्लिश इज one of the 6 official language. A B C D ऑप्शन अछि 6 ऑफिशियल लैंग्वेज रे थिला आपनकर देखिबे थियोरी रे द यूनियन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. तेन 8 नंबर आपनकर राइट आंसर होछि 8 नंबर राइट आंसर होछि 8 नंबर ए. देन आसीबा 9 नंबर क्वेश्चन. 9 नंबर क्वेश्चन अछि इंग्लिश एज ए विंडो लैंग्वेज through which we are able to see the scientific, technological, agriculture, commercial and literacy development taking place in the India state, taking place in India, taking place in Odisha, taking place in the world. तेणु आपण माने जानि परछंती जेहेतु एटा विंडो लैंग्वेज तेणु इट इज टेकिंग प्लेस इन वर्ल्ड. राइट आंसर होछि 9 नंबर रो आपनकर डी. तापरे आसीबा 10 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश इज ट्रीटेड एज लाइब्रेरी लैंग्वेज बिकॉज डैश. ए बी सी डी ऑप्शन अछि 10 नंबर राइट आंसर हो इट इज द की टू द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. सेति पे आको लाइब्रेरी लैंग्वेज को हाउस. तेणु राइट आंसर हो आपनकर 10 नंबर रो ए ऑप्शन ए. देन परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा 11 नंबर क्वेश्चन द फ्रेज इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज ओनली implies that dash. English taught to be read in library. Most of books in library are English. It is necessary to read periodically written in English. The skill of reading would be paid much more attention than others. तेणु राइट आंसर हम आपण माने जानि पारुछंती थियोरी रे देखिछंती जे थियोरी आपण भूली जाइछंती पुनी थरे आउ थरे ताकू बैक करी देखंतु. The skill of reading would be paid much more attention than others. राइट आंसर होछि 11 नंबर रो आपनकर डी. ये थिला देन परवर्ती थियोरी ऊपर नजर पकेबा जहा कि रहिछि ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश. ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश हले आपनकर यूनिट 1 आपनकर कवर हे जाउछि. ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश रे हमें थियोरी ऊपर नजर पकेबा देखंतु गोटे आपनकर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश रो एंड एम ऑफ लर्निंग इंग्लिश प्रॉपर्ली रो आपनकर गोटे चार्ट दिया है. द टर्म ऑफ कंटेंट स्पेसिफिक हम जदि देखिबा चलो गोटे चार्ट करके दिया जाय छै आपण मानकू. द फॉलोइंग चार्ट मेक्स द ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश प्रॉपर्ली. ए चार्ट माध्यम रे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश बुझी जिबा. ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश जदि हम देखिबा यार उद्देश्य बा ऑब्जेक्टिव होछि दुईटी ऑब्जेक्टिव रखा जाय छै अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन. जते बेले अंडरस्टैंडिंग ता होछि रिसेप्टिव एवं एक्सप्रेशन ता आपनकर होछि प्रोडक्टिव. अंडरस्टैंडिंग को पुनी दुई भाग रे विभक्त कराय छै. स्पोकन इंग्लिश को हमें अंडरस्टैंडिंग करबा आ रिटन इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग करबा. एगुडा रिसेप्टिव जेतु ताको हमें पैसिव कमांड बोली कहू छै. फ्लो चार्ट को देखंतु ताले ऑब्जेक्टिव होछि दुई प्रकार अंडरस्टैंडिंग आ एक्सप्रेशन. अंडरस्टैंडिंग पुनी तार माध्यम कोन मीडिया कोन स्पोकन आ रिटन. जेहेतु एटा रिसेप्टिव रहउछि ऑब्जेक्टिव ता तेन ताको पैसिव कमांड कहउछि. अदर हैंड रे तार आउ गोटे ऑब्जेक्टिव रहउछि मुख्य ऑब्जेक्टिव कोन ना एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन अर्थात प्रोडक्टिव. आकु पुनी दुई भाग रे विभक्त कराय छि इन स्पीच एंड इन राइटिंग. तेणु एक्सप्रेशन हमें इंग्लिश टाको कहा माध्यम रे एक्सप्रेशन करिबा ना स्पीच रे एक्सप्रेशन करिबा आउ इन राइटिंग रे एक्सप्रेशन करिबा. एटा प्रोडक्टिव यार ऑब्जेक्टिव टा. तेणु एटा को हम एक्टिव कमांड बोली कहू छै. ताले रिसेप्टिव टा होछि आपनकर पैसिव कमांड आ प्रोडक्टिव टा होछि एक्टिव कमांड. जा चार्ट आपन को देखौ छी या ऊपर ही आपनकर मैक्सिमम क्वेश्चन आसीबो केवल एई चार्ट को जदी आपन माने मन रखि.
तापरे लिसनिंग कॉम्पिटेंसी ऑन स्किल आमे लिसनिंग कॉम्पिटेंसी जदि देखिबा ताहले द स्टूडेंट अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स phrases and sentence in context. Then the student understand statement, question, command, follow direction given orally by mouth, follows example, description and narration, grasps substance and gets idea of what is spoken, listening attentively so as to be able to speak pertinent related to topic question. Student maintains his or her listening attention for a reasonable length of time. ये थिला आपणकर लिसनिंग कॉम्पिटेंसी रो पॉइंट ताले स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी रो किछि पॉइंट मने रखिबा जे स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी लिसनिंग कॉम्पिटेंसी रीडिंग कॉम्पिटेंसी एंड लिसनिंग कॉम्पिटेंसी रो एई पॉइंट गुडा को आपणकर क्वेश्चन आसे ताले स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी रे कोन रहिछि ना प्रोड्यूस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स so that the listener can understand easily. ये थिला स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी रो पॉइंट देन स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी रो परवर्ती पॉइंट ऊपर नजर पकेइबा परवर्ती पॉइंट रहिछि स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी रे स्टूडेंट यूजेस एप्रोप्रिएट वर्ड स्टोर सेंटेंस स्ट्रेस एंड एलिमेंटरी इंटोनेशन पैटर्न्स स्टूडेंट स्पीक्स intelligently while making statements asking question giving instruction and reporting event etc. Then puts idea in proper sequence, evokes or context required response in his listener, narrates simple experiences, common example relating to topic discussion, describe accurately what he or she observed and experience, converse in familiar social situation and uses polite expression in appropriate situation such as excuse me, I beg your pardon etc. ये थिला आपणकर स्पीकिंग रे देन आसीबा रीडिंग कॉम्पिटेंसी रो और रीडिंग स्किल रो कतगुडा पॉइंट देखिबा student develop correctly reading habits, grasps meaning of words sentences from the context, understand label and simple notice, and written instruction, understand the total substance of context, locate significant details, follows sequence of idea, facts, etc., makes interference, responds to passage read, acquired the ability to use suitable dictionary, comprehend or understand material falling outside the prescribed text, develop the habit of reading for pleasure and information as well. Confirm information matters such as timetables, dialogues and brochure. ये थिला आपनकर रीडिंग देन आसीबा राइटिंग स्किल रो पॉइंट अछि बा राइटिंग कॉम्पिटेंसी रो पॉइंट द स्टूडेंट लर्न्स द procedure of writing, the uses of elementary punctuation mark, capital letter, tries writing grammatical correct sentence, spell word correctly, writes neatly and legibly with reasonable speed, use appropriate vocabulary, write accurate description of people, place, things and display imagination in writing, semi-controlled composition like stories, event and process. Then objective of context specification. The student utter names daily in used article, speak command, simple sentence, applies oral instruction of the teacher into practice and utters name of various body parts, birds, animal, article, etc. and writes name of animal, birds, fruits, vegetable and other food material, writes small sentence from books and written also copies word of sentences correctly. Then asiba objective of English ro किछि probable question answer उपरे देखंतु जे objective of English आमे देखिले तार फ्लो चार्ट देखिले से संबंधित
କିଛି क्वेश्चन आंसर তাহলে क्वेश्चन রয়েছে এক নম্বরে language learning deals with the skill of dash তাহলে language learning ର skill কোটা কହୁଛି writing ଅଛି reading ଅଛି speaking ଅଛି and all of these ଆପଣ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି right answer ହବ all of these ଦୁଇ number question ଅଛି proper eye span is needed for dash eye span reading ପାଇଁ ଦରକାର ନା writing ପାଇଁ ନା speaking ପାଇଁ listening ପାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି eye span ଟା ଆପଣଙ୍କର reading ବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ proper eye span ତେଣୁ right answer ହେଉଛି ଦୁଇ number A ଦେନ୍ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ question 3 number question 3 number question ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ phonetics or the science of pronunciation deals with the skill of dash जो phonetics କାହାର ସ୍କିଲ୍ କରେକ୍ଟ ରାଇଟିଂ ନା କରେକ୍ଟ ସ୍ପିକିଂ ନା କରେକ୍ଟ ଲିସନିଂ ନା କରେକ୍ଟ ରିଡିଂ 3 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହବ ନା 3 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ବି କରେକ୍ଟ ସ୍ପିକିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନେଟିକ୍ସ ଦରକାର ଅଛି 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଇଜ୍ ଦି ଏବିଲିଟି ଟୁ ରାଇଟ୍ ଇଂଲିଶ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କରେକ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଇଲିଜେଣ୍ଟଲି ନା ସ୍ମୁଥଲି 4 number right answer होची B correctly then 5 number question writing skill plural helps student from the habit of reading dash for pleasure for information na for pleasure and information na for understanding theory रे आपण देखछंती reading skill टा दरकार होची for pleasure and information then आसीबा 6 number question होची speaking skill or competency deal with the ability of speak dash speaking skill cleverly beautifully na intelligibly na comfortably 6 number आपण माने मन रखथिबे थियरी को पुनी थरे बैक करी देखंतु स्पीकिंग स्किल टा आपनकर और कॉम्पिटेंसी टा इंटेलिजिबली पय दरकार होछि जनसिबा 7 number question होछि the act of following direction given orally deals with dash ना एटा आपनकर होछि reading skill na writing skill na listening skill the act of following direction टा होछि आपन को जतेले फॉलो करबा 7 नंबर राइट आंसर होछि C ना listening राइट आंसर होछि 7 नंबर C देन 8 नंबर क्वेश्चन ऊपर नजर पकाइबा 8 नंबर क्वेश्चन होछि आपनकर यूजिंग एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल आइटम इज कंसर्न विथ dash एटा हबो आपनकर 8 नंबर राइट आंसर B हबो ना राइटिंग कॉम्पिटेंसी बेला हमको वोकैबुलरी दरकार होछि देन 9 नंबर क्वेश्चन होछि स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ग्राउंड एज dash स्पीकिंग राइटिंग एटा एक्टिव ना पैसिव होछि देखंतु स्पीकिंग एंड राइटिंग हम कहिबा आउ लेखिबा एटा आपनकर प्रोडक्टिव होछि ना रिसेप्टिव होछि स्पीकिंग एंड राइटिंग ता आपनकर स्पीकिंग एंड राइटिंग टा 8 नंबर आपनकर कोन होछि ना 9 नंबर रे स्पीकिंग एंड राइटिंग आपनकर एक्टिव होछि कहिबा और लेखिबा एटा प्रोडक्टिव होछि रिसेप्टिव हेले कोन हेतांता आपनकर लिसनिंग आ राइटिंग हेतांता 10 नंबर अंडर पैसिव स्किल वी हैव डैश पैसिव रे कोडा हबो ना पैसिव रे आपनकर हबो जेटा लिसनिंग एंड रिटन एंड स्पोकन हबो रिटन एंड स्पोकन कोठी अछि देखंतु राइटिंग एंड लिसनिंग अछि तेना 10 नंबर होछि 10 नंबर राइट आंसर होछि 10 नंबर सी आपनकर रीडिंग एंड लिसनिंग 10 नंबर सी देन आसीबा शेष क्वेश्चन स्टूडेंट एक्वायर द एबिलिटी टू यूज सुटेबल डिक्शनरी पय हमको कोन दरकार हबो को स्किल टा ना आपनकर राइटिंग स्किल टा तेनो यार राइट आंसर होछि 11 नंबर डी ये थिला आपनकर यूनिट 1 रो समस्त थियोरी एवं प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर परवर्ती वीडियो रे आपनकर यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 आसीबो देले आपनकर इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट हे जिवो दीर्घ समय धरि आपण माने मो चैनल सहित जड़ित थिबारु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद पुणी देखा अन्य वीडियो रे सेते बेले पर्यंत विदाय जय जगन्नाथ नमस्कार।